एक रेक्टेंगल की क्लास में आते हैं और उसमें रेक्टेंगल का एरिया और पैरामीटर फाइंड करते हैं। एरिया और पैरामीटर के दो मेथड बनाओगे। क्लास में आते हैं रेक्टेंगल, उसके अंदर एक कंस्ट्रक्टर बनाते हैं। रन करते हैं। अब एरिया का ये फंक्शन बनाते हैं एरिया कैलकुलेट करने के लिए। ये हमें रिटर्न करेगा। देखो फंक्शन बनाते हैं पैरामीटर फाइंड करने के लिए। ये हमें रिटर्न करेगा। फार्मूला होता है पैरामीटर फाइंड 2 into नन प्लस विड्थ। ये ऑब्जेक्ट आते हैं रेक्टेंगल वन के नाम से। इसमें रेक्टेंगल का मेथड कॉल करते हैं क्लास, उसमें उसकी कंस्ट्रक्टर की वैल्यूज पास कर देते हैं। लेंथ हमारे पास 5 हो जाएगी और विड्थ 8। ये का मेथड कॉल कर लेते हैं। इसी तरह पैरामीटर को भी प्रिंट कर लेते हैं। इसको रन करते हैं।
तो ये हमारा प्रोग्राम ठीक हो गया, एरर्स खत्म हो गए और उसने जो पैरामीटर प्रिंट करके दे दिए।